Union Budget 2024. Just 1 week to go. What are the expectations from this budget? Yes, in this video, I will be discussing the expectations from Budget 2024. So please stay tuned till the end of this video. Let's start with the agriculture sector. This time there is a coalition government in the center, and the expectation is little more from this government. Although this government has already, earlier government has shown its intent by setting MSPs and increasing MSPs every year. So improving the health of farmers is always a target of the government. There is no doubt about it. But this time, as there is Nitish Kumar and Chandrababu Naidu in the center, and both of the states strongly represent agriculture, so possibility is bit stronger. तो क्या possibilities है फर्टिलाइजर में जो सुनने को आ रहा है, एक कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्सिडीज का बात सुनने को आ रहा है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और यूरिया प्राइस का हाइक का भी एक बात सुनने को आ रहा है, दैट इज द डिमांड ऑफ द सेक्टर टू द गवर्नमेंट। तो द लास्ट यूरिया प्राइस हाइक वाज टेकन इन 2018, so the possibility is there. So if it happens, so subsidy outgo will obviously increase, but simultaneously the health of urea manufacturer will be in a better position. The promotion of biofertilizer uh, through subsidies is another key demand. तो possibilities बहुत कुछ है, let's see. एग्रोकेमिकल सेक्टर में PLI for agrochemical is a long standing demand. तो अगर ये होता है तो that will help to boost export. पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बात भी सुनने को आ रहा है। पोस्ट गवर्नमेंट में इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्टिंग, में टेक इनिशिएटिव टू इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्टिंग infrastructure and storage facilities. Can save, means this facility, improved infrastructure and storage facility can save significant percentage of vegetables and horticulture products. So there is a possibility of some step taken by the government to boost agricultural infrastructure. तो ये agricultural infrastructure में क्या आएगा? Storage facilities में obviously some warehouses and specifically refrigeration of the warehouses will be there. तो ये जो cooling system है that may get boosted if this is taken. क्योंकि ये फाइनली एग्रीकल्चर इज अ पेरिशेबल कमोडिटी, तो इसको सेव करने के लिए आपको कूलिंग सिस्टम के अलावा देयर इज नो अदर चॉइस, तो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। और इससे पहले वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने का कुछ स्टेप्स भी गवर्नमेंट लिया था। हब एंड स्पोक्स मॉडल, वी नो ऑल दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी। So these are the additional steps government may take. These are positive, obviously, for the sector as well as for some associated sector. As I referred, अगर ऐसा होता है तो कूलिंग warehouse का कूलिंग जो सप्लाई करता है उसके उन लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। मगर simultaneously let me give a disclaimer that I do not have any buy sell hold recommendation from this video. This is made this video I'm making just for sharing the knowledge, and please don't consider it as any buy sell hold recommendation. क्योंकि ये जो expectations है, ये expectations fulfill हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर fulfill होता है तो ही बहुत मेजर कुछ थ्रस्ट आएगा एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, ऐसा भी सोचना सही नहीं है। क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा एट व्हाट एक्सटेंट दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट। हो सकता है एक पर्टिकुलर जिसका जिसका जिक्र हम बार बार करता है कि whenever something comes, some impetus comes, we need to understand what percentage of the entire portfolio is going to get benefited. हो सकता है उसका कंट्रीब्यूशन 4-5% है, तो हार्डली मैटर्स। आपका 4-5% अगर 200% भी ग्रो कर कर लेता है
तो हाउ डज इट मैटर? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका 2 करोड़ का 20 करोड़ भी हो जाता है, 10 टाइम्स बढ़ जाता है, मगर कंपनी का पोर्टफोलियो 1000 करोड़ का है, तो 1000 करोड़ के रेस्पेक्ट में 2 करोड़ और 20 करोड़ हार्डली मैटर्स. So those are something we need to understand. So blankly taking a call is quite risky, and that's why like take sensible decision, check with your registered advisor. चलिए नेक्स्ट सेक्टर डिस्कस करता है, टेलीकॉम सेक्टर. लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हम बोलेगा कि इन द सेक्टर हैज लॉट्स ऑफ हैज प्लेस्ड लॉट्स ऑफ डिमांड टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी फॉर दिस अपकमिंग बजट, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडस्ट्री को बुलाता है एंड शी चेक्स, लाइक शी आस्क्स पीपल टू शेयर देयर थॉट. So what are the demand? So in that sense, since telecom sector has told lots of things, lots of put forward, lots of their demands. Telecom companies urge for tax reforms. There is a suggestion to abolish regulatory levies such as Universal Service Obligation Fund and AGR. Government may consider suspending the USO, that is Universal Service Obligation, which contributes 5% to the AGR until the existing USO corpus becomes 80,000 crore, uh, approximately 80,000 crore. Suggestion for reducing the license fee from 3% to 1%. Apart from that, it has requested exemptions on custom duty for certain telecom equipment, point to be noted, including the body requested to reduce customs duty on for 4G and 5G network products. मगर साइमल्टेनियसली यहाँ एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेलीकॉम इक्विपमेंट स्टॉक्स है परफॉर्म मल्टीफोल्ड ऑलरेडी, तो ये उसके ऊपर कितना ट्रिगर है, क्योंकि आपका वैल्यूएशन कितना फेवरेबल है इस प्राइस में, वो भी देखना पड़ेगा. साइमल्टेनियसली हाउ मच रन अप हैज हैपेंड, वो भी देखना पड़ेगा. हो सकता है इसके ऊपर कम रन अप हो, आपका डाउन साइड ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है आगे मतलब इट गेट्स इनटू द स्टॉक्स गेट्स इनटू डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर, पूरा ओपन स्पेस में घुस गया और लाइक इट रन्स अप, ऐसा भी हो सकता है. सो आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट, दीज आर ओनली क्लूज. तो डोंट जंप इनटू एनीथिंग, टेक सेंसिबल डिसीजन. The current customs duty exemption for vessels engaged in laying submarine cables in India is set to expire on September 30th. So, government has telcos have also sought customs duty exemption for cable repair and installation operations for submarine cable system. तो देखना पड़ेगा कौन सा कंपनीज है और क्या परसेंटेज, क्या कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का. These are something we need to take care of. Next, railways को जो railways is a like has already given some fascinating performance. तो 40,000 नॉर्मल रेल बॉगीज को वंदे भारत में कन्वर्ट करने का तो सुनने को आ रहा है. तो इफ इट हैपेंस देन इट विल बी अनदर ट्रिगर फॉर कंपनीज हु आर इनटू द वंदे भारत, और also like companies who are supplying products to Vande Bharat, they also will be benefited. ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर ऐसा आता है तो इम्पैक्ट क्या होगा. मगर ऐसा भी हो सकता है कि आया नहीं कुछ और इंडस्ट्री डिजर्टन हुआ तो सेल ऑफ हुआ, ऐसा भी हो सकता है. सो टेकिंग अ कॉल इज लाइक इट्स लाइक अ बेट, टेकिंग अ बेट. अच्छा, यहाँ पे 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर का बात कर रहा है, बात सुनने को आ रहा है. देयर आर एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स. पोस्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स का भी बात सुनने को आ रहा है, और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स जिसका भी रिसेंटली मतलब लास्ट कुछ समय से सुनने को आ रहा है. सो दीज आर गोइंग टू बी लाइक possibilities there to get some booster in this space in this budget. Let's see. डिफेंस में बोलने का कुछ नहीं है कि एलोकेशन हैज बीन ग्रोइंग एवरी बजट, इन एवरी बजट, एंड गवर्नमेंट्स मोटिव इज टू नंबर वन increase the
scope of Indian defense, adding new equipment, adding new weapons, advanced weapons. So these remain always the endeavor of DRDO and the Indian defense. So, so these are something we need to take care of. और as far as, अच्छा यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिया का, अगर इंडिया को एक्सपोर्ट हब के हिसाब से देखना, एक पॉसिबिलिटीज तो है. गवर्नमेंट इज ऑलरेडी स्टार्टेड एम्फसाइजिंग फॉर लास्ट फ्यू इयर्स टू मेक इंडिया डिफेंस हब. तो यहाँ पे कुछ एडिशनल कुछ आ सकता है, नंबर वन. नंबर टू एंड नंबर थ्री, एज फार एज इंडियन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज कंसर्न, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एजिंग इंडियन एयरफोर्स, इसको रिवाइव करने के लिए, इनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, देयर मे बी सम एडिशनल measures in terms of domestic manufacturing, indigenous manufacturing, as well as some foreign procurements. तो ये सारा चीजें हम लोग को देखना पड़ेगा. देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्कशंस रिलेटेड टू शिप बिल्डिंग सेक्टर इन दिस बजट. एक्सपर्ट्स आर एक्सपेक्टिंग टू सी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनरोड्स इनटू द शिप बिल्डिंग सेक्टर. तो लेट्स सी क्या आता है फाइनली. तो इसके अलावा पावर सेक्टर में भी काफी मतलब थोड़ा बहुत बूस्ट बूस्ट अप का एक पॉसिबिलिटी है. द कंट्री एम्स टू फॉर 500 gigawatt of renewable energy by FY30 and 85 gigawatt of additional thermal capacities by FY32. India's current installed power capacity is 444.75 gigawatt, of which 54.6% is thermal, while the rest are clean sources of energy. Target is to reduce the lead time for uh, adding thermal capacity and ensuring the timely supply of necessary equipment. यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है. पिछले दो बजट में जितना एम्फासाइज था सिर्फ रिन्यूएबल्स के लिए था, थर्मल के लिए कुछ नहीं था. और थर्मल का न्यू प्रोजेक्ट जो आ रहा है उसमें थर्मल का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली लेस है. मगर दिस टाइम अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थर्मल को भी थोड़ा सा को भी एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट में टेक्स सम डिसीजंस. अच्छा, इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन का बात काफी समय से चल रहा है, तो इंसेंटिवाइजिंग कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इज हाईली पॉसिबल साइड. पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को भी कुछ मिल सकता है. पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ऑल्सो सीइंग एन इंक्रीज ऑफ 39% इन देयर बजटरी एलोकेशन, जो इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन है. तो पावर सेक्टर में इतना ही. नेक्स्ट इज टेक्सटाइल सेक्टर. टेक्सटाइल सेक्टर में सुनने को जो आ रहा है, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्कशन के इनिशियली लास्ट 2020 2021 में जो PLI स्कीम आया था, प्रॉफिट लिंक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट का आया था, that was targeting only the man-made fiber segment and textile technical textile segment, with may key focus into technical textile segment. Technical textile इस दौरान अच्छा किया है, there is no doubt about it, मगर it's a long way to go. यहाँ this is just the beginning. मगर मैन मेड फाइबर में ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट कुछ होने को हम लोग देखा नहीं है. मैन मेड फाइबर सेगमेंट हैज बीन लैंग्विशिंग सिंस क्वाइट लॉन्ग. कॉटन टेक्सटाइल इज द मेजर सेक्टर इन इंडिया. और कंट्रीब्यूशन का बात करते हैं तो कॉटन का 70% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, जहाँ पे मैन मेड फाइबर का 30% है. मगर ग्लोबल सिनेरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जहाँ पे ग्लोबल में 28% सुनने को जाता है कि अकॉर्डिंग टू सम स्टैटिस्टिक्स 28% कंट्रीब्यूशन इज कॉटन एंड 72% कंट्रीब्यूशन इज मैन मेड फाइबर फॉर इन द ग्लोबल मार्केट. तो ये रेशियो चेंज होने वाला नहीं है. ऐसा नहीं है कि दिस रेशियो विल चेंज, इंडिया विल सडनली कैच अप दिस मैन मेड फाइबर सेगमेंट और ये पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. वाई? बिकॉज इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइक इंडिया, कॉटन इज द बेस्ट फिट. तो आप कॉटन छोड़ के मैन मेड फाइबर में हो सकता है वो 1-2% का प्लस माइनस हो जाए, और कंट्रीब्यूशन 1% का बढ़ भी गया तो क्या क्या मेजर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा. मगर international market में the motive was of the government was to capture the international market, which has not been reflecting at all.
मैं आपको डेटा दिखाऊंगा जहां पे दिख रहा है कि पिछले समय से लाइक देर इज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल इन टर्म्स ऑफ in the data. So this data set is showing that the scope of improvement is huge, मगर कुछ हुआ नहीं इस दौरान। लास्ट 5 years में कुछ नहीं हुआ है। मैनमेड फाइबर सेक्शन सेगमेंट हैज बीन लैंग्विशिंग टिल डेट। अब गवर्नमेंट का क्या आ सकता है कि मैनमेड फाइबर को दे चुका है, अब क्या आ सकता है कि सुनने को जा रहा है दिस पीएलआई स्कीम मे गेट एक्सटेंडेड टू कॉटन फाइबर कॉटन टेक्सटाइल सेगमेंट। अगर ऐसा होता है देन इट विल बी अ बिग बूस्टर, क्योंकि दिस इज द नेचुरल means natural crop of India, and there are lots of booster, natural booster in the country। तो यहाँ पे कुछ मदद तो डेफिनेटली कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा। एंड एंटर अब किस हिसाब से आता है दैट इज काफी इंपॉर्टेंट। अगर पूरा कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर को देता है तो द एंटायर वैल्यू चेन विल गेट बेनिफिट फ्रॉम yarn टू रेडीमेड गारमेंट्स। एंटायर सेगमेंट विल गेट बेनिफिट, राइट। तो पता नहीं क्या आएगा, अगर आता है तो दैट विल बी गुड, क्योंकि दिस सेक्टर हैज पोटेंशियल बट हैज बीन लैंग्विशिंग। इंडिया इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट। You need not to think on foreign market. Even the domestic market is very big, and this segment has been languishing for different reasons. कभी कॉटन प्राइस के वजह से हो रहा है, कभी इंटरनेशनल कॉटन इंडियन कॉटन का स्प्रेड के वजह से हो रहा है, कभी यर्न प्राइस फॉल होने के कारण खराब कर रहा है, कभी यर्न और कॉटन का जो स्प्रेड है दैट गेट स्क्वीज, तो yarn मिल्स को इम्पैक्ट होता है। तो वैल्यू चेन इज वेरी बैडली impacted right through the period। So there is a possibility that government will come up, will give some booster to this particular sector to revive the sector, because this sector has lots of potential। यहाँ पे और एक चीज है, like there is a catch। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, and I will show you data what is the current status। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, in this budget 2024 the industry is expecting अच्छा ना ये तो हम बोल चुका है। अच्छा, द गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव $100 billion of export textile export by 2030। The cabinet's recent approval for the continuation of rebate of state and central taxes and levies scheme for apparel and garment export uh, continues till means extended till March 31st 2026। It's a very important move, interesting move। It has already been taken, so this is positive obviously for the sector। मगर इसका इम्पैक्ट किसको आएगा, मतलब टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट में है दे आर लाइकली टू बी बेनिफिटेड। एंड इस पीरियड में हम लोग देखा है ऑल्दो ओवरऑल सेक्टर हैज नॉट बीन डूइंग गुड, बट स्टिल सम of the companies managed to survive or managed to give good results just because of the export part, export business। तो ये भी देखने को मिला है। डोमेस्टिक डिमांड इज वेरी स्लगिश। तो आगे चल के क्या आएगा कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द, मेरे हिसाब से माय अंडरस्टैंडिंग इज के अगर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहता है and discretionary spending goes up, in that case this ready-made textile sector also will get some boost। This is my understanding। So let's see how it works। तो यहाँ पे let me share my screen and let me show you a few data set which are very interesting। This data is basically related to Indian textile export। I hope my screen is visible। So let me show you very interesting data set। Let me get into a website and let me show the data। Yes, so let me log in here।
So I just wanted to share this particular data set with you in the textile. Uh, this data is basically related to what is the total textile and apparel which is exported to US, because US is a very big importer of textiles. So as I was referring, कि इस दौरान ज्यादा कुछ हुआ नहीं. So let me show that in that entire textile and apparel import, share of China is in 2023. This is the last year's data. I'm not downloading the whole set of data. There is a download button. We can have a check from there. I'm just not to lengthen the video in a precise manner. Let me show you. Uh, China's share in total textile and apparel import in US is around, you can see, 25-26%, which was in June 2023. 25-26%. It has gradually came down, and in the month of March it came down to 18%. But India, see, the share of India is almost around 8, 9, 10%, not very big thing. Vietnam is around 14-15%. Cambodia is 3-4%. Share of Pakistan is 3-4%. Share of Bangladesh is 5-6 to 7%. If in a separate video, I will show you how Bangladesh has captured the lost market share of China. Share of Indonesia is also 3-4-5%. A little improvement is visible here for Indonesia. So I'm not getting into the data in details. Just parallelly want to show this is sectoral data, textile, US cotton textile. Acha, ready-made garments. Let me show this particular area how India is doing. Indian export is doing, rather export to the whole world, right? So if you have a look into this particular data in 20, I'm not downloading the full set of data. This 23-24, you can see in, this is in USD million. Okay, it is in USD million. It is written somewhere. I'm not getting into it in details. So this is 9374.9 USD million. So this is million, means if I convert it into crore, then this is 937. I'm just taking this July data. Let's say this is, or let's say the full year data. Let's take full year data. This is if I this is in million. So if I convert it into crore, then it will be 12031. That means 12,031 crore. And if I convert it into billion, then it becomes 12 billion. So India's current ready-made garment export is 12 crore. In FY24, it was 12 billion. 12 billion US dollar. And what is the target of the government? That is 100 billion US dollar. You can understand the kind of impetus is required to capture that opportunity, the kind of manufacturing boost up is required, and the kind of participation of the players are required. This is huge. This is huge. So this is something I just wanted to share with you guys. So I can take a different video to discuss this thing. Okay, now apart from that, another few sector, that is I will electronic manufacturing sector. Electronic manufacturing sector में सुनने को जो आ रहा है, there may be some impetus, क्योंकि, and in which form, that is electronic makers have sought rationalization of import duty structure and reducing the duties on components of mobile phone parts and sub-assemblies over time to attract global value chains to India and enable them to create manufacturing at scale. The move will help the company
to compete with China and Vietnam, which currently have much lower and simplified input duty structure. So very interesting is this electronic manufacturing. Why? Because Chandrababu Naidu has already declared to make Andhra Pradesh an electronic manufacturing hub. So on that context, if some impetus comes from the electronic sector, that can be a very big booster. And electronic sector means it caters a semiconductor as well. And we are India thrive to start this boost up this particular semiconductor manufacturing in India to reduce its dependence on foreign countries. So these are the sectors. There are a lot more because I don't want to make it even longer. There are a lot more, as I said. So I hope whatever we have discussed, these are going to be beneficial for all of you. And I hope that you will take a decision sensibly. And please don't consider any of the stocks or sectors discussed as a buy, sell, or hold recommendation just because of this upcoming budget expectation. Thank you so much. And please don't forget to subscribe my channel. Thank you and see you in the next video.